Hello everyone, this is Vishakha Taga coming up with next round of current affairs. So next in the series, we are bringing some social news for you, and in that series, we'll talk about the PGI score has been released for the state. Now, PGI score is related to education. What is PGI score in exact class? We'll deal in detail. First, let us dig deep into news. Like, what does PGI score of this year says? So, PGI score says that this year Punjab, Tamilnadu and Kerala scored the higher than 90% in education performance, that is performance grading index. This PGI is performance grading index, in which the PGI has scored really good. In entire of this, like Punjab tops, Punjab की ranking 929 रही है. Tamil Nadu is actually the second has come second, जिसकी 906 उसकी पूरा overall उसने अपना score किया है, और केरला का score 901 रहा है, and with this Kerala has come second, which is surprising because Kerala usually stays on first or second in terms of health and education indicator. But this time it is Punjab which has topped with a score of 1929, and Tamil Nadu has made a score of 906 and Kerala has 901. तो इस तरीके के स्कोर जो हैं, like you are supposed to remember, because it may not be UPSC that is asking you, but it will be UPPCS, BPSC and other like Rajasthan PCS. If you're preparing for those kind of examination, then state are very good at asking the questions like that कि this आपका ये indicator था, इसमें क्या किया था. Also, if you're preparing for any state services, then the funda for the state services is that the state services, like you're supposed to quote the data of that particular state. And what happen is at the last stage we don't know कि कहाँ से data collect करना है. But you, in the back of your mind, if you have this thing that you're going to give BPSC, give UPPCS, या फिर आप पंजाब का state services आप लिखने वाले, जो कि होता ही 4-5 साल में एक बार है, पर कोई बात नहीं. If you're thinking of writing, और इस साल पंजाब का मेंस भी लिखने वाले हैं, then this is something you can quote anywhere, that in performance grading index Punjab had topped. उसके बाद then there is Tamil Nadu and then there is Kerala. So this is like ranking जिसको आप ध्यान रखेंगे. And then Punjab and then Gujarat drop from 2nd to 8th rank. Supposedly in the last ranking Gujarat was at the second place, but this year it has come 8th. So even the Gujarat is not performing well. And MP and Chhattisgarh the only state जिन्होंने actually regression देखा है. Otherwise most of the state are performing well. They're actually going ahead. But MP and Chhattisgarh ने सोचा है कि गाड़ी थोड़ा पीछे चलाते हैं. So this is like PGI score, and then let's understand little bit about PGI score कि PGI score होता क्या है. Now PGI score or the performance grading index is actually monitors the school education of the state and UT. तो स्टेट और यूटीज की स्कूल एजुकेशन के बारे में बताती है विद रिस्पेक्ट टू कि लर्निंग आउटकम कितना है, एक्सेस कितना है, इक्विटी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है और गवर्नेंस कितना है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कि गवर्नेंस इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट कैसी है स्कूल की, या फिर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या वहाँ पे प्ले ग्राउंड है, क्लासरूम का सेटअप कितना है, वहाँ पे बेंचेस वगैरह कितने अवेलेबल हैं, इक्विटी कितनी है इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्विटी है या नहीं, कास्ट इक्विटी है या नहीं, क्लास इक्विटी है या नहीं है, एक्सेस कि बच्चों के एक्सेस है नहीं है, रिमोट इज दैट like children from the backward area, are they able to have some kind of access to the school education or not. So access is also very important parameter. And learning outcome, it not just 99% of the primary children of the primary age are going to school, उनके learning outcome भी देखना है. Because ऐसा की रिपोर्ट क्या कहती है, ऐसा की रिपोर्ट कहती है कि 50% of the student of the class 5th are not able to read the second class की text book. अब इस तरीके का अगर लर्निंग आउटकम रहेगा, सो इट इज नॉट अ गुड पैरामीटर. आप चाहे 99% स्कूल एनरोलमेंट रेशियो लेकर आ जाओ, बट अब लर्निंग आउटकम अगर आपका खराब है तो वो एनरोलमेंट रेशियो इतनी इफेक्टिव नहीं है. दैट मीन्स इट नॉट जस्ट द पीपल आर गोइंग टू स्कूल, दे शुड ऑल्सो बी लर्निंग. So on the basis of these parameter, PGI आपको रैंक करती है. Now HRD ministry is compiling the schooling index. Just remember कि नीति आयोग के स्कोर से आपको अलग रखना है, because नीति आयोग भी आपका स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स निकालती है. So this is where don't confuse. आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे विजन में, इनसाइट पे या कहीं पे भी, and then question is often asked, can you see the performance grading index? Oh, नीति आयोग release many index. Let's just इसको टिक कर देते हैं. Don't take.
मत टिक करें, बिकॉज ये नीति आयोग नहीं निकालता, इसको मिनिस्ट्री ऑफ HRD मिनिस्ट्री निकाल रही है। नीति आयोग तो आपका स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स निकाल रही है। इसमें भी 33 ऑफ द 70 क्राइटेरिया अंडर द PGI ऑफ द ओन असेसमेंट, जो PGI के हैं उसमें से उसके जो 70 क्राइटेरिया हैं उसमें से 33 आपकी नीति आयोग यूज कर रही है। एंड द 70 इंडिकेटर्स दैट दिस PGI यूज आर एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग टीचर वैकेंसी कितनी है, डायरेक्ट एंट्री रिक्रूटमेंट कितना है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। सो PGI इज अ वेरी होलिस्टिक इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और ये 100 पॉइंट के बेसिस पे रैंक करती है, राइट। 100 इसका हाईएस्ट है, एंड इफ यू सी 1000 इसका हाईएस्ट है, और 1000 हाईएस्ट पे अगर तमिलनाडु आपका तमिलनाडु आपका 906 लेकर आ रहा है, पंजाब 929 लेकर आ रहा है, दैट मीन्स पंजाब एंड तमिलनाडु आर परफॉर्मिंग रियली वेल in terms of education quality. So this is you are supposed to keep in mind जब आप PGI को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इंट्रैक्शन से पढ़ेंगे तो आपको PGI भी याद रहेगा कि 1000 में से तमिलनाडु 920 तमिलनाडु 909 लेकर आ गया, और जो आपका जो पंजाब है वो 929 लेकर आ गया, सॉरी तमिलनाडु 906 लेकर आ गया। सो PGI इज बेसिकली एन इंडेक्स जो कि एजुकेशन क्वालिटी को मेजर करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आपके इस इंडेक्स को निकालती है। सो दिस इज वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन जो आपको याद होनी चाहिए। Next in the social news is Chief Minister of Delhi has asked, जब pizza can be delivered at home, then why not ration can also be delivered at home? And in this case, I know many of you might be sitting at home or must have ordered something from outside, and you can ask one question very comfortably. In the entire lockdown, services like home delivery for food was allowed, then not why ration for the poor people? So Chief Minister has asked the same question to the Prime Minister of the country कि if pizza delivery is allowed तो फिर राशन क्यों घर पे डिलीवर नहीं कर सकते? And it said कि Chief Minister of Delhi is requested for the doorstep delivery of ration. Now all of this जो Chief Minister की holistic scheme है जिसमें वो doorstep delivery of all the services it is trying to do, but it could not be rolled out because it did not get the go ahead from the center. And we know कि दिल्ली में एक नया law पास हुआ है. I'll bring a let us explain session on that कि how the the entire scenario in the Delhi has been changed, but Delhi need the consent of the LG and the center in order to pass a bill. Now what has happened is it passed the bill, but the LG did not give a go. Now LG said no. For any bill to be passed, governor LG की yes चाहिए होती है. LG said no, and LG itself is connected to center. अब LG तो center की सुनता है, तो center it is LG who have said no, but LG center की सुनता है. So indirectly, so center actually has said no. So Chief Minister is saying कि इस पूरे scenario में कि center should allow them to actually deliver the ration to home, because it is the LG and indirectly center which has said no to the initiative of the Delhi government. They want to deliver ration to the home. Now in this house to house ration system is implemented, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं. जैसे आपका राशन माफिया खत्म हो जाते, जो कि स्कीम में हम डील करेंगे कैसे. ना इस पूरी स्कीम में आप इसका मतलब आप इसे कहाँ लिख सकते हैं, या आप इसके मेंस के आंसर में आप इसे बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं. फर्स्ट इज इन द क्वेश्चन ऑफ फेडरलिज्म, दैट हाउ सेंट्रल स्टेट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है. So if any question is on the federalism, that center state should work in cohesion, एक cooperative federalism की spirit होनी चाहिए. But what we are seeing is a competitive federalism, that center is not cooperating with state, or state is actually making request to the center but is not listening, and center have various grievances. So this is one particular initiative जो कि आप अपने मेंस के आंसर में वहाँ पे लिख सकते हैं. Next is good governance. This is something Delhi government की scheme को specially keep in mind. Delhi government, Kerala, MP and Rajasthan, they're coming up various initiatives which are becoming the example of good governance. And you might be writing various international example कि कोस्टा रिका ने ये किया, या उसने ये किया, भूटान ने ये किया. अपनी कंट्री के भी एग्जाम्पल लिखो, they are also very good. In fact, that creates a very good impression that you are very well aware कि इंडिया में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है. And Delhi government, this can set example how state can eliminate the middlemen, can empower the citizen and bring transparency. अगर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन कार्ड होगी तो फेयर प्राइस शॉप पे क्या होता है, यूजुअली
फे प्राइस शॉप पे लाइक रोजी रोटी अधिकार आंदोलन का कुछ टाइम पहले सर्वे हुआ था, एंड इट फाउंड कि 24% ऑफ द शॉप्स वर फाउंड क्लोज्ड, and even when they had ration, they were not delivering ration to the people because of this middlemen for exploiting people. So there is existing data कि कैसे middleman ना लोगों को exploit करता है. आफ्टर विच गवर्नमेंट डिसाइडेड कि इस मिडिलमैन के केस को ही खत्म कर देते हैं, राशन सीधा लोगों के घर पे डिलीवर कराते हैं. बट द इंटायर स्कीम व्हाट केम इन बिटवीन इज आर एलजी, बिकॉज एलजी हैज टू वी नो कि कोई भी बिल कैसे पास होता है. किसी भी बिल के लिए 2 हाउस होते हैं, बट स्टेट में 1 हाउस है दिल्ली में. दिस लाइक व्हेन ऑल ऑफ द मेंबर, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर यस कह देते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से अगर बिल पास हो जाता है तो उसके बाद इट नीड द कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नर और एलजी इन केस ऑफ यूटी. But if LG says no, the bill is not passed. So because of which the government is the state government is complaining कि please इस bill को pass करो, this bill is good initiative. Now let us understand कि state government का bill क्या था, state government क्या लाना चाहती थी. Now state government came up with a scheme in which the beneficiary will be provided with a ration of 4 kg wheat, 1 kg rice and 1 kg sugar per person at convenience of their home. तो 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल और 1 किलो शुगर उनके घर पहुंचाई जा रही थी इस स्कीम के अंदर. एंड एट करंट जबकि इन द करंट स्कीम इज व्हाट, इट इज अ फेयर प्राइस शॉप. नाउ पीपल हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यू. दिस इज अ फेयर प्राइस शॉप एंड यू मस्ट हैव सीन. कुछ ऐसी पिक्चर दिखाई देती है, पीपल स्टैंड इन क्यू फॉर लॉन्ग टाइम, लोग सुबह जाके खड़े हो जाते हैं. एंड विद डोर स्टेप डिलीवरी काफ़ी लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी. And it is not just कि it is like facilitating people in terms of कि उनके घर पे deliver करे. It is also said कि not just wheat, in fact wheat flour, गेहूं की जगह आटा provide करेंगे, and it would have been delivered at the doorstep of the people. जैसे मिडलमैन खत्म हो जाते हैं, वो मिडलमैन जिसमें मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, रोजी रोटी अधिकार आंदोलन, लाइक यू कैन राइट दिस इन योर सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव. It conducted a survey and it found even in lockdown the 24% of the shops were closed. Even when they had ration, they said that they don't have ration. Because of which middlemen have the habit of exploiting the people. Many times they exploit the people. And in order to eliminate that, Delhi government came up with a scheme. But what has happened is the central government is not giving the consent, or LG is not giving the consent. So because of which the scheme is failing. So this is the one part of the social news. Now let's move on with the next part of the social news. Next is a woman Dalit Pradhan is UP is insulted by the locals. Like she was not just she was woman, she was Dalit as well, and the locals in the UP insulted her. Now like to dig deep in the news, what happened exactly is like she was Pradhan of the Mahoba area of the UP. अगर आप UPSC प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस एग्जाम्पल की थोड़ी सी ना डायरी बना के रखिए, लिस्ट बना के रखिए, आपके बहुत काम आएगा. This is something like while if you're preparing for any state exam and you're finding a data which is state specific, this can be very helpful to you. And if you're preparing for आपका पूरा focus UPSC पे ही है तो state specific exam भी आपको एक edge ही देंगे in terms of misgovernance, in terms of good governance. So like keep a diary with yourself. So what has happened is a woman Dalit the woman a woman who's not only woman but also Dalit as well, and she was insulted in the Mahoba area of the UP. Not only people misbehave with her, the caste slur were passed against her. So and after which the relatives of the woman they went to the police and they slapped charges against the accused, that is ST/SC Prevention of Atrocities Act. So like there are 3 things to understand. फर्स्ट, पहली बात इसी चीज़ें ऐसे ही एग्जाम्पल को आप अपनी सोशोलॉजी या फिर सोशल 1 पे GS पेपर 1 में लिख सकते हैं, सोशोलॉजी ऑप्शनल में लिख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में लिख सकते हो, बिकॉज PRI इज पार्ट ऑफ इट इन इवन इज कास्ट और फीमेल एम्पावरमेंट दोनों ही सभी के सेक्शन में. तो एक एग्जाम्पल आप याद रखिए और आप तीनों में कोड कर सकते हैं. GS पेपर में आपका GS पेपर 1 हो गया, आपका ऑप्शनल हो गया, आपका GS पेपर 2 हो गया. सो कीप अ रिकॉर्ड ऑफ डायरी लाइक दिस. Now, where would you write this? You can write how traditional authority is actually colliding with modern authority. अब उसको modern authority उसको merit के basis पे मिल रही है. She has won fair on the basis of merit in election, and that's why she deserved that seat. The modern authority is giving her the seat of a panchayat.
but traditional authority, but traditional landlords or traditional authority in terms of Brahmins and upper caste are not ready to give her that right. तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी आपकी ब्राह्मण्स और अपर कास्ट और मेल के पास होती है, बट मॉडर्न अथॉरिटी फीमेल के पास भी जाने लगी है और लोअर कास्ट के पास भी जाने लगी है, तो अब इनके बीच में क्लैश आने लगा है. दिस इज व्हाट, ये आइडेंटिटी आपकी अचीव्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट ये आपको आइडेंटिटी मिलती है, बट ये आइडेंटिटी आपकी अस्क्राइब्ड है. अब इसमें अब आप पैदा हो गए थे बड़े घर में, बड़ी कास्ट के, तो ये आपको आइडेंटिटी मिल गई. And people are not willing to let go their power that they had on the basis of name they had. So like आप अपने ऑप्शनल में एग्जाम्पल लिखेंगे, आप अपने पेपर 1 में इसको ऐसे फ्रेम करेंगे कि इट इज अ क्लैश इन बिटवीन द ट्रेडिशनल अथॉरिटी वर्सेस मॉडर्न अथॉरिटी, ascribed आइडेंटिटी वर्सेस द अचीव्ड आइडेंटिटी. तो ये तो रहा मेंस का आंसर कि इसको ऐसे समझे. नेक्स्ट इज इफ यू राइटिंग फॉर यूपीपीसीएस, लाइक दिस इज लाइक वन डेटा, लाइक आई फाइंड आउट, आप लिख सकते हैं. NCRP data shows that around 7.3% of the crime, the increase in crime against the SCs. Even with the higher education, when the crime rate should have been like come down, instead crime rate is rising. And one of the prominent reason, because the reason is asked in mains, one of the prominent reason is the lower caste has started asserting themselves, and the upper caste have not educated themselves to adjust to new reality. So the power struggle is seen, and its power struggle often comes in forms of violence. So like this is how you're framing your answer. कि like lower caste, which was like traditionally जिसके पास power कम थी, it has started getting higher power. It has started asserting itself. But upper caste, which has traditional power, is not willing to give that power. और अभी पावर स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, और वो पावर स्ट्रगल अक्सर वायलेंस की फॉर्म ले लेता है, because of which there is a rise in violence, that is 7.3% rise in crimes against the SC. Now UP alone account for 25% of the total cases. So this is something you can write in a UPPCS exams. Next is about ST/SC Prevention of Atrocities Act, जो कि आपके PT के लिए important है. This is something you'll remember for the PT. Is that Article 17 of the Constitution abolish the practice of untouchability. आपके आर्टिकल 17 के अंदर प्रैक्टिस ऑफ लाइक सबसे पहले आर्टिकल 17 abolishes the untouchability, and on the basis of article 17, that is abolishing of untouchability, article 14 which provide for right to equality, and article 15 which also provide that state shall not discriminate in between its citizen, or no citizen should discriminate. That means it's also provide for forming a society which is without any discrimination. So on the basis of which सबसे पहले आपका अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट पास किया गया था 1955 में, बट दिस एक्ट वाज फाउंड टू बी लाइक लेस यूजफुल बिकॉज इट कुड नॉट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द लोअर कास्ट एंड ट्राइब्स, because of which in 1976 the act was named as Protection of Civil Right Act. Again it became ineffective, and in 1989 ST/SC Prevention of Atrocities Act came in 1989, which attempt to protect the marginalized community against the discrimination. अब इसके थोड़े प्रोविजन, तो थोड़ी हिस्ट्री थी, अब थोड़े इसके प्रोविजन समझते हैं. In terms of understanding its provision, it lists various offences to relating to various patterns or behavior, which says ki these are like these kind of act would amount to punishment. It even prescribe punishment for the various kind of acts, like breaking the self-esteem, engaging in criminal act against the ST/SC, denying them social, economic, political right, and even section 18 of the act provide that anticipatory bail is not available to the offender. Remember in this case the anticipatory bail, like some time ago I dealt about bail 3 तरह की होती है. एक आपकी रेगुलर बेल होती है, आप अरेस्ट होने के बाद लेने जाते हो. एक आपकी एंटीसिपेटरी बेल होती है, आपको पता है कि आप अरेस्ट होने वाले हो, उससे पहले बेल ले लो, तो उसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं. So in this case, anticipatory bail is actually denied. A person cannot claim a anticipatory bail. आपको पता है आपने किसी लोअर कास्ट को हैरेस किया, आपको पता है कि वो पुलिस कंप्लेन करेगा, अब आपको लग रहा है कि मतलब अब कंप्लेन तो होने वाली है, चलो बेल ले लेता हूँ, कम से कम नहीं मिलेगी. दिस इज अ काइंड ऑफ ऑफेंस जिसमें आपको बेल ही नहीं मिलेगी, तो एंटीसिपेटरी बेल आपको नहीं मिलने वाली. Now it identify what constitute the atrocities. Like इस एक्ट में completely atrocities को define किया गया है, and all of these like most of these offense are made cognizable. अब समझते cognizable offense क्या होते हैं. Cognizable offense वो होते हैं जिनके लिए पुलिस को अरेस्ट वारंट्स की जरूरत नहीं होती, like डाउरी, डेथ, और इन तरह की चीजों के लिए पुलिस डज नॉट वेट कि ऑफेंडर भाग जाए, पुलिस सीधा जाके उनको पकड़ लेती है, अरेस्ट वारंट की जरूरत भी नहीं पड़ती.
Otherwise, in non-cognizable offense, पुलिस नीड एन अरेस्ट वारंट, बट दिस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. पुलिस को अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है, वो सीधा अरेस्ट कर सकती है. Now, punishment for the willful negligence of duties by the non-STSA public servant. If willfully, like a servant belong to non-ST/ST category, there is a possibility, it has been found on the regular basis, that often people non belong to ST/ST category जो public servant होता है वो sympathize नहीं करते और willfully complaint register नहीं करते. अब आर्टिकल 15 मूवी तो आप सबने देखी होगी. आपने ये भी देखा होगा कैसे अपर कास्ट के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करते लोअर कास्ट के like victims के. So because of this, the article, like in the recent amendment, it is made a punishable offense, that if a particular servant do not register a case in which a person from a lower caste community or tribal community register an FIR, want to register an FIR, but the officer does not act on it, तो उसके लिए भी पनिशमेंट ही एक्ट प्रोवाइड करता है. द एक्ट ऑल्सो सेज कि स्पेशल कोर्ट होना चाहिए. बेसिकली सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट में कर दो ऐसे केसेस को ट्राई करने के लिए. पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में भी बात करते हैं. एंड एक्ट ऑल्सो सेज दैट it is implemented by state government and UT administration with central assistance. So this was like in detail की act की this is in detail about this act. Now there is one dimension to understand. अपर कास्ट अभी भी मेजोरिटी में है और जो हमारी लोअर कास्ट है वो 17% ऑफ द पॉपुलेशन ही कॉन्स्टिट्यूट करती है. एंड then if our society is patriarchal and if society is against the lower caste, then how come the people from the lower caste or Dalit women is able to be elected as sarpanch? Then we have to understand the constitution for that matter. It says by the 73rd Constitutional Amendment Act, reservation for female and Dalit was provided in local self-government. तो अब आपकी पंचायत में वुमेन और दलित के लिए रिजर्वेशन होती है, तो चाहे आप वोट करना चाहें या ना करना चाहें, बेसिकली एक सीट उनके लिए आती ही है और लोगों को एक दलित प्रेसिडेंट इलेक्ट करना होता है. Article 15(3) itself makes special provision for the women or other backward communities. And then Article 43D specifically deal with the actually that 1/3 of the total number of seats should be reserved for the women और रोटेशन बेसिस पे वो पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिल जानी चाहिए. सो 1/3 ऑफ द सीट आर रिजर्व फॉर द वुमेन. सो आर्टिकल 243 डील्स विद द रिजर्वेशन. तो एक तो हमने आर्टिकल 15 देखा, एक आर्टिकल 243 देखा. नेक्स्ट इज इवन 110th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ब्रिंग टॉक्स अबाउट कि 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए वुमेन के लिए. इवन इन मेनी स्टेट्स हैव डन दैट, कि हरियाणा एंड देन सम अदर स्टेट्स वी हैव सीन कि 50% रिजर्वेशन वुमेन को प्रोवाइड भी कर चुकी है पंचायत में. Now, on the basis of this, now just give me the answer to this question. Under which of the article of the Constitution does not, I'm sorry, यहाँ पे does not आना चाहिए था, does not deals with the reservation for the weaker section. इसमें से कौन से आर्टिकल में reservation for weaker section के provision नहीं है? पहला आपका 15(3) तो अभी हमने देखा, आर्टिकल 15 डील करता है. आर्टिकल 16 में भी रिजर्वेशन है, लाइक इफ यू रेड आर्टिकल 16 जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए है, एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन रिलेटेड प्रोविजंस हैं, एक्सेप्शंस दिए गए हैं. आर्टिकल 243D, दिस इज डी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू करेक्ट दिस. आर्टिकल 243D में भी है. इट इज आर्टिकल 243A जो कि ग्राम सभा से डील करता है. तो इसीलिए इट इज दिस आर्टिकल, जो आर्टिकल D इज योर आंसर. इट इज आर्टिकल 243A जो कि रिजर्वेशन से डील नहीं करता. I hope with this you are able to understand, आपने you have understand in detail कि STSC Prevention of Atrocities Act क्या होता है और इस आंसर को आप मेंस में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं. With this, thank you so much for staying with me. Now stay at home, stay healthy and stay safe and stay connected to ACube IAS.